सपोर्ट करिए, चाहे टैक्स में रियायत दीजिए, चाहे किसी और तरीके से अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स जैसे आपने दिसंबर के महीने में खर्चा किया, उस पेस पे अगले साल भी बढ़ाते रहिए। अब जब खर्चा करना है और फिस्कल डेफिसिट कम करनी है, तो रिसोर्सेस रेज करना जरूरी है। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज्यादा है, तो उनके ऊपर और दायित्व मत डालिए। टैक्स नेट के बाहर बहुत बड़ी मछलियां घूम रही है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आइए। दूसरा, डाइवेस्टमेंट हम हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार की मार्केट हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं करते, तो इस बार थोड़ा डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए। तकरीबन 10% ऑफ मार्केट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत पैसा वहां से रेज करिए। तो नॉन टैक्स से और टैक्स कंप्लायंस से पैसा रेज करिए, निवेश करिए, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करिए। बस इतना त्रिवेणी संगम कर दे तो आई एम श्योर गुरमीत कहेगा चक दे फट्टे, और नीलेश एनविजन वाला भी कहेगा सारू बजट छे। बस इतना, वो कहते हैं बस इतनी जरूरत है, बस इतनी जरूरत है, इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सुबह जब पापा पूछते थे कि क्या चाहिए, पापा वो एक बाइक दिला दो, उसमें हर महीने पेट्रोल भरा दो और थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो हर महीने, बस इतना ही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अच्छा सौरभ जी, वैसे आप कौन से वाले बंगाली हैं, जो बांग्ला समझते हैं वो वाले बंगाली, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं वाले बंगाली? बंगाली भी थोड़ी बहुत बांग्ला आती है, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेते हैं। चलिए, खैर जोक्स असाइड, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, आई थिंक मिडिल क्लास के ऊपर भयंकर प्रेशर है, काफ़ी बड़ा स्क्वीज़ है, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी की ग्रोथ शायद उतनी नहीं है जो पहले थी। सो एक मिडिल क्लास टैक्स कट आ जाए तो मज़ा आ जाए। अप टू 10 लाख, करीबन 80% हमारे इनकम टैक्स फाइलर्स 10 लाख से कम कमाते हैं, तो वहाँ पे अगर रिलीफ आ जाए तो मज़ा आ जाए। डीरेगुलेशन पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने काफ़ी कुछ कहा येस्टरडे कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द वे, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ डीरेगुलेशन का अगर इंटेंट भी सुनने को मिल जाए बजट में, बिकॉज आई थिंक छोटे बिजनेस के लिए, लघु उद्योग के लिए काफ़ी सारा रेगुलेशन, काफ़ी सारे टैक्सेस, कोड्स बन चुके हैं, और कम घटा दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो बढ़िया होगा। एंड फाइनली आई थिंक जो सबसे अनोखा एस्पेक्ट रहा है पोस्ट कोविड खर्चे का, कि कैपेक्स को 30% से बढ़ाया गया है प्रति वर्ष मोटा मोटी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को केवल 5-6% से बढ़ाया गया है मोटा मोटी। ये जो दिशा है खर्चे का, मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो जो लोअर इनकम स्ट्राटा है उसमें ज़बरदस्त पेन हो रही है। सो आई एम होपिंग टू सी कि कैपेक्स ग्रोथ इस बार 10-15 से नीचे आ जाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ, मतलब कि खर्चा एडुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वो डबल डिजिट में आ जाए। नीलेश जी, आपकी राय क्या है? मतलब आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब बजट से एक्सपेक्टेशन, और ये बजट 26 पे नहीं आ रहा है, ये 23,500 पे। अच्छा, पिछला बजट भी इसी प्राइस पे आया था है ना, 23,500 पे बजट आया था वो भी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? पहली एक्सपेक्टेशन है डू नो हार्म। मतलब अगर 26,000 होता तो शायद टैक्सेस बढ़ जाती, शायद 23,000 है तो शायद टैक्सेस नहीं बढ़ेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि टैक्सेस और कम किए जाएं, सिर्फ मिडिल क्लास पे नहीं, बट जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी टैक्स रेट्स जो बढ़े, पिछले कई वर्षों में बढ़ी है टैक्स रेट्स, वो उसमें कटौती आए, या शायद कई जगह अगर तुमको हटानी भी पड़े तो हटानी भी चाहिए। शायद बजट वो माध्यम नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के जो टैक्स रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। जो कई टीडीएसएस के मल्टीपल एप्लीकेबल रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करना ज़रूरी है, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। जो ओवरऑल बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे भी हो सके वो करना चाहिए। और उसके अलावा जो 3 सेक्टर्स है, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कंटिन्यूड फोकस, कंटिन्यूड एम्फेसिस और कैपिटल एलोकेशन, और अगर खर्चे बोले तो खर्चे या इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट, बट वो सब पे कंटिन्यूस फोकस रहना चाहिए। तो एक तरफ ग्रोथ पे आपका फोकस रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ किसी भी तरह टैक्सेस को रैशनलाइज कीजिए। ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, टैक्सेस की बात हो रही है तो आपका क्या व्यू रहेगा? स्कोप है क्या फाइनेंस मिनिस्टर मैम के पास कुछ हमारे टैक्सेस कम करने का? नमस्कार अनुज, बिल्कुल स्कोप है। न्यू रेजीम फाइनेंस मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है।
2/3 टैक्स पेयर्स अब न्यू रजीम में आ चुके हैं, हम सब जानते हैं। ओल्ड रजीम को थोड़ा सा सौतेला सा बना दिया गया, उस पर अब छेड़खानी नहीं होती, शायद वो जाने वाली है अभी या आने वाले कुछ सालों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यू रजीम को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 8-9 करोड़ के आसपास हैं। जो इसमें से लोग असल में टैक्स देते हैं वो 2-3 करोड़ के बीच में है। तो वो 2-3 करोड़ 20-22 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कराते हैं। मैंने उनको वीआईपीज कहा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर ब्लू आइड पीपल, उनको उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से बार बार टैक्स लें, उन्हीं लोगों से और ज़्यादा टैक्स लें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मैं नीलेश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी मछलियाँ बाहर घूम रही हैं, उनके लिए नेट बिछाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे बड़े किसान हैं, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, शायद उसको ना ही छेड़ा जाए, पर ऐसा मेरा मानना है कि जो बहुत बड़े किसान हैं उनके ऊपर अब इट्स हाई टाइम कि आप एग्रीकल्चर टैक्स टॉप लेवल के किसानों पर भी लगाएं, और बहुत सारे लोग बाहर टैक्स नेट से उनको टैक्स में लाएं। न्यू रजीम की बात करें तो अनुज, मुझे लगता है कि स्लैब 3 लाख से शुरू होता है, 3 की बजाय 5 लाख करा जाना बहुत रैशनल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये सच है कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स 10 लाख से नीचे के हैं, तो उससे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में उतना फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का फर्क पड़ जाता है। और उसके अलावा सैलरी वाले ज़्यादा मार खाते हैं, सैलरी वालों से ज़्यादा टैक्स भी आता है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दी थी न्यू रजीम में, वो 1 लाख करना उसके लिए मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर कर दी जाए। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी जब घुस रहे थे अपना पार्लियामेंट सेशन का कुछ इनिशियल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास पे महालक्ष्मी की कृपा रहे। तो मुझे लगता है महालक्ष्मी की कृपा यही हो सकती है कि उनको कुछ टैक्स में रिलीफ आना चाहिए। इसके अलावा अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी मुझे लगता है अनुज के चेंज हो गई है। अब पहले 5-6 लाख को मिडिल क्लास देखा जाता था, अब 15 लाख तक आप आराम से मिडिल क्लास ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूं, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 15 लाख के बाद आप 30% लगाना शुरू कर देते हैं। इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि 30% आप 15 लाख से लगाते हैं, और उसके अलावा आप 7-7.5 लाख तक एक 87A की रिबेट होती है 25,000 रुपए की, वो भी अब बढ़ा के 10 लाख तक कर देनी चाहिए। तो न्यू रजीम अगर दिल के करीब है वित्त मंत्री के, तो मुझे लग रहा है उस न्यू रजीम में ही उसको और लुभावना बनाया जाए, इससे और ज्यादा लोग न्यू रजीम में आएंगे, और आपकी जो ओल्ड रजीम है वो रिडंडेंट होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होती जाएगी, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे पिछली बजट में, मैं अनाउंसमेंट सुनी थी, आप ही के चैनल पे था, और मुझे लगता है उसकी भी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है कि एक बहुत सिंप्लीफाइड, आसान, सेल्फ कंप्लाइंट, आप खुद ही पढ़ के और आसानी से टैक्स दे सकते हैं, आपको बार बार टैक्स एक्सपर्ट्स के पास ना जाना पड़े, कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप जाइए, वरना आप ना जाइए। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आज कुछ सुनने को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा, कम से कम उसके ट्रेसेस अनुज जरूर इसमें आने चाहिए। बिल्कुल, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन है। वैसे 75,000 से 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बढ़ भी गया तो 25,000 रुपये पर आप टैक्स सब बचाएंगे, 7,500 रुपये साल का, मतलब 5,500 महीने का। क्या करेंगे इस धनराशि का। लेकिन एक चीज़ बताऊं, शरद जी ने कही कि 15 लाख वाले मिडिल क्लास में, मुझे तो वीरू आज भी ना फीलिंग मिडिल क्लास की होती है वैसे, मतलब फ्रैंकली जो 10-15 साल पहले फीलिंग थी ना, वही आज भी फीलिंग होती है। खैर, एक बार नीलेश भाई के पास चलते हैं और जानते हैं कि और यहाँ से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अब इस समय थोड़े से पंख लगे, खासतौर से मिड कैप्स में। नीलेश भाई, पिछला 1 महीना 2 महीना ब्रॉडर मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा, और मुझे बार बार जब भी मैं बात करता हूँ मुझे वो आपका वो कर्व याद आता है जो आपने मार्केट के लिए कहा था कि कर्व ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे हो गया था। तो अब पिछले 2 महीने में क्लियरली उसमें बहुत ब्रूटल सेल ऑफ आया। क्या इस बजट के बाद वो सेल ऑफ वापस रिज्यूम होगा, या अब वो जो जितने एक्सेसेस निकलने थे वो निकल चुके हैं? तो अनुज भाई, मुझे लगता है कि इस बजट में अगर हम फॉरेन निवेशकों को विश्वास दिला पाए कि हमारी ग्रोथ बाकी देशों के सामने अच्छी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, और उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, तो होपफुली उन्होंने जो बेचा है उसके ऊपर वो शायद सोचेंगे। आज की तारीख में अनुज भाई हम देख रहे हैं जो बिकवाली भारत में हो रही है वो एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास में हो रही है। यूएस मार्केट ने इतना अच्छा किया है पिछले 15 सालों में कि लोग इमर्जिंग मार्केट बेच बेच के यूएस में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से भी थोड़ा उस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। तो हमें इमर्जिंग मार्केट से अलग होना है, लोगों को ये कन्विंस करना है कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट एक तरफ और भारत एक तरफ। अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट बजट और क्रेडिट पॉलिसी ये दोनों से हम इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे।
मार्केट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बॉटम आउट हो जाएगा अगर बजट और क्रेडिट पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड रही तो। अच्छी बात आपने कही। और नीलेश जी और सौरभ, क्योंकि आप दोनों सेल साइड पर रहे हैं और काफ़ी एफआईएस के साथ आपका एक समय था जिसमें काफ़ी इंटरेक्शन होता था, क्या तंग कर रहा है एफआईएस को? मैं दोनों से आपसे व्यू जानना चाहूँगा। नीलेश, पहले आप बता दीजिए क्या एफआईएस को तंग कर रहा है और क्या बदल सकता है? तो जो तीन रीजंस जो मेरे ध्यान में आती है, पहली बात तो ये है कि जैसे नीलेश ने बताया कि जो एक होम मार्केट ज़्यादा अच्छी कर रही है, खास करके पिछले एक साल में। तो अगर होम मार्केट ही अगर अच्छी कर रही है तो आपको देश के बाहर कहाँ जाना है? मतलब यही बात होगी कि आप इंडियन इन्वेस्टर और इंडिया मार्केट इतनी अच्छी करी तो आपको जाके नाइजीरिया में क्यों इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल मतलब उस तरह का जो अगर सिंप्लीफाई बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि वैल्यूएशंस, मतलब जो हिस्टोरिकल एवरेज जो था उसके कंपैरिजन में हम प्रीमियम पे चल रहे थे। जो पिछले 3-4 महीने के करेक्शन आए उसमें वो प्रीमियम चला गया है, तो हम अभी थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एवरेजेस के लाइन में है। तीसरी बात, जो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है, और मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा वो उनका कहना है कि बड़ी मार्केट्स में एज अ फॉरेनर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, या शायद एक बहुत यूनिक मार्केट है जहाँ पे शायद आपको एक फॉरेनर की हैसियत से आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो अभी तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक आपका ग्रोथ सुपीरियर था, आपके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे और रिटर्न्स आ रहे थे मार्केट में। जैसे ही आपकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, वैल्यूएशंस रिलेटिवली हायर है, और अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये जो सारी बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक इरिटेंट बन के आ जाती है, और ये एक वजह बन जाती है उनके लिए कि हम इसलिए निवेश नहीं करना चाहते या इसलिए हम लोग बेच रहे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये तीनों रीजंस है जो कभी भी इंटरेक्शंस होता है तो ये तीनों रीजंस उभर के आते हैं। सौरभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर क्या बदले तो एफआईएस वापस आए भारत में? आई थिंक टू बी फेयर, सिर्फ एफआईआई को नहीं, डोमेस्टिक निवेशक को भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर देखें जिस प्रकार का अर्निंग स्लो डाउन दिखा है लास्ट 5 क्वार्टर में, राइट, ये सबसे तगड़ा अर्निंग स्लो डाउन है मेरे करियर का। अगर हम लीमन ब्रदर्स, ग्रेट जीएफसी को और कोविड को एक्सक्लूड कर दें, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि 30% EPS ग्रोथ निफ्टी का 5% बन जाता है 5 क्वार्टर में। तो ये तगड़ा स्लो डाउन है अर्निंग्स में। मेरे ख्याल से उतने फटाफट ही अर्निंग स्लो डाउन जाएगा नहीं, और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको मद्देनज़र रखते हुए, इस अर्निंग स्लो डाउन को, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, तो वैल्यूएशन इंडिया में अनसस्टेनेबल है। तो जब तक मार्केट और सस्ता नहीं हो जाता, वो विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक निवेशक हो, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरमीत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्योंकि सबसे बड़ी दुखती रग मार्केट की यही रही है। रोज़ मतलब कि कई बार हम कहते हैं ना और कितना ही बेचेंगे, तो एक बार किसी ने मुझे भेज दिया था कि ये चैलेंज नहीं है, ये मतलब जनरली पूछ रहे थे, क्योंकि हमने जब पूछा ना कितना और बेच सकते हैं, वो और 7,000 करोड़ अगले दिन बेच देते हैं। वो किश्त बन गई थी एक रोज की। अनुज, एक थोड़ा सा एरोगेंस भी था, हम बीच में बोलने लगे थे हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। और आप देखिए 5,000 करोड़ का ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लग गया है। वही तो 5,000 करोड़ का एक फिक्स कोटा लेके आते हैं कि इतना ही बेचना है। तो जो नीलेश ने बात बोली, पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न निफ्टी का 10 ईयर US बॉन्ड से ज़्यादा फर्क नहीं है बॉन्ड से। हाँ, तो US का 10 ईयर बॉन्ड 5% यील्ड देगा, मार्क टू मार्केट गेन देगा थोड़ा बहुत, तो आप 7-8% डॉलर टर्म में एक इजी ट्रेड बना सकते हैं अभी इस लेवल पे। 4.5% का यील्ड है, और आपका भी जो पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न है, तो हमने वो 10 को 12.5 करके, मुझे लगता है हम कई बार ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं। बिल्कुल। फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है, रिस्क कैपिटल जा रहा है, और हम पंजाबी में बोलते हैं मन नीवा मत ऊंची। हम थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, फॉरेन कैपिटल चाहिए हमें, हमारी डिपेंडेंस कम हुई है, ये अच्छी बात है। ये बोलना कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इमर्जिंग मार्केट है, हमें तो रिस्क कैपिटल को इज्जत देनी चाहिए। बट मैं सौरभ की बात से एग्री करता हूँ, स्लो डाउन है और ग्रोथ को रिवाइव करना चाहिए। अगर 8% ग्रोथ इंडिया अचीव नहीं कर रहा है तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ अगर हम 8% ग्रोथ नहीं करेंगे और 11-12% नॉमिनल नहीं करेंगे, तो वो बाकी सब स्लोगन्स हैं कि हम विकसित बनेंगे या ये बनेंगे। तो मुझे लगता है ग्रोथ फोकस होना चाहिए, और ये रेटिंग एजेंसीज को प्लीज़ करने का जो हम कोशिश कर रहे हैं 10-15 साल से, उन्होंने नहीं प्लीज़ होना। तो आप अपना ग्रोथ चार्ट करिए, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो थ्रू करेंगी, ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा नीलेश भाई, ये पासिंग जो अर्निंग सीजन था वो बैंकों के लिए वो कैसा लगा आपको? तो आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की जो स्थिति काफ़ी ड्राई हो गई थी उसको कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है, बट पासिंग नंबर्स कैसे लगे आपको इस बार के बैंकों के? बैंकों में कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। जो मीठा है वो ये है कि उनके मार्जिन उतने करेक्ट नहीं हुए जितनी लोगों की अंदेशा था, एंड अब लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो जाहिर है जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ
एकदम लो डबल डिजिट में है वो थोड़ा वहां से इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज है कि होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग में एनपीए अभी भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं, एंड वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट डीलिवरेजिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को एनपीए में दिख रहा है। जो कुछ खट्टा है वह है माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बढ़ते हुए एनपीए, और जो बैंक के क्रेडिट कल्चर खराब है जहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बड़ी ज्यादा है उनके मार्जिन के ऊपर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होती दिखी है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें वैल्यूएशन में आती है। तो कुछ बैंक है जो पिछले 3 या 5 सालों से वैल्यूएशन में डी रेट होते हुए ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पे निवेश करने के लिए योग्य बनते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा लगता है कि निवेश करने का समय आ गया है, वैल्यूएशन आपकी फेवर में है, और आप बॉटम अप जिस कंपनीज में अनसिक्योर्ड लेंडिंग की रिस्क कम है वहां पे देख सकते हैं। जब एनबीएफसी का नाम आता है ना अनुज, तो गुरमीत ने मेरे को एक बार एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। पत्नी का मैसेज आया ना, फ़ोन आया ना, बजाज फाइनेंस का फ़ोन जरूर आता है सबसे पहले, है ना। ये B2 पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो मैंने बोला था कि सुबह अलार्म की तरह 7 बजे फ़ोन करिए, फ़ोन जरूर आएगा सबसे पहले। नहीं, मुझे भी आता है बजाज फाइनेंस का फ़ोन, उस बार गुरमीत याद आते हैं उस वक्त। तो कोई याद करे ना करे, वो लोग ज़रूर याद करते हैं। और मुझे अनुज किसी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे किसी ने बोला था कि कुछ हद तक शायद इंटेंशनल भी था थोड़ा ना, ये जो ओवर हीटिंग थी, बहुत सारा पैसा, जो आपने लेवरेज की बात करी सुशील जी से, बहुत सारा पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन स्टॉक मार्केट की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा था। एफएनओ में भी लॉसेज हुए हैं। तो कुछ रेगुलेटर मुझे लगता है कॉन्शियसली भी स्लो कर रहा था अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, बट मुझे लगता है वो कई बार माइक्रो मैनेजमेंट में आप दोनों तरफ एक्सेस हो जाता है। उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं, आई डोंट थिंक 7 बजे आप दोनों में से किसी का भी फ़ोन सुनना चाहते हैं। खैर एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट का एक बार रुक करते हैं। और थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि बाजार रिंग उतरने वाला है अनुज, है ना। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल 6 मिनट बचे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आएंगी और बजट पेश करेंगी। वैसे एक चीज़ है, बाजार थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। पहले मतलब यही बाजार पिछले मंडे को क्या था और अब क्या है, मंडे को हम 22,800 पर थे निफ्टी पर, अब हम 23,600 पर हैं। तो करीब 800 पॉइंट की अब हमने रैली देखी है वहाँ से। और मिड कैप देखिए क्या एकदम जो कंप्लीट कोलैप्स हो चुका था मिड कैप इंडेक्स, वहाँ पर एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं। शरद जी, काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या कुछ एक्साइज टिंकरिंग होगी पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि एक जब क्रूड ने बढ़ना शुरू किया था तब एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो उससे पहले एक्साइज बढ़ाई गई थी वो शायद एट सम स्टेज कट की जाएंगी, क्योंकि कभी लोअर क्रूड का फ़ायदा तो मिला ही नहीं एक आम इंसान को। लेकिन उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो महंगा तेल फिर भी खरीदना पड़ा। कुछ उसमें स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है अनुज, क्योंकि जिस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है फ्यूल प्राइसेस का ओवरऑल इन्फ्लेशन पर, और आपको पता है कंजम्पशन नीचे जाने का मेन रीज़न या टॉप रीज़न में से एक रीज़न इन्फ्लेशन है कि लोगों को हाथ में बच नहीं रहा तो वो और सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी बचत नहीं हो पा रही है। तो सरकार के पास मौका है, बिल्कुल एक्साइज टिंकरिंग ओवर ड्यू है, होनी चाहिए। अगर फ्यूल प्राइसेस, अब क्रूड हम देख रहे हैं कि $80 से नीचे अक्सर रहता है, कभी कभार होता है 80 से ऊपर जाता है, और OMCs का प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, OMCs की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार को करना चाहिए। सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, इसको जीएसटी में लाने का भी प्रेशर है, पर कम से कम जब तक जीएसटी में नहीं आता तो आप एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल करी जा सकती है, और अनाउंसमेंट आएगी तो बहुत स्वागत करने योग्य होगी। और इन्फ्लेशन के लिए लोग पूछते हैं कि भाई बजट में क्या किया जा सकता है, तो उन कदमों में से एक कदम ये हो सकता है कि आप एक्साइज को कम कर दें और पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत दें, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इससे फर्क पड़ेगा अनुज। बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, क्योंकि जीएसटी तो हम जानते हैं जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत है, यहाँ पर एक पॉलिसी अनाउंसमेंट जीएसटी पे तो सुनाई दे सकती है, पर जीएसटी आप कहीं महंगा सस्ता कुछ हुआ वो यहाँ पर उम्मीद नहीं होती है। एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करके बैठा भी हूँ, और लोग जनरल आम आदमी भी उम्मीद करके बैठा। और अभी मैं नीचे आपके टैग लाइन पढ़ रहा था कि आम आदमी का बजट होगा, तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है पेट्रोल डीजल से अच्छी और कोई राहत नहीं होगी अगर इन्फ्लेशन को हिट करना है तो। बिल्कुल, ये मोदी साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट होगा, और बजट गरीब और किसानों की उम्मीदों का बजट होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। नीलेश भाई, पिछले बजट में एक चीज़ जो आई थी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी सी
गलत लगी होगी वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि आपका तो खैर एक हमेशा से व्यू रहा है कि हम क्यों गोल्ड इतना इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ी चर्चा चल रही है कि इस बजट में वापस उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे देखेंगे उसे? गोल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आप गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं, और उसके दूसरे कंसर्न से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो लोगों को सोने में निवेश करना और अच्छा लगता है। हमें अपना जो गोल्ड होल्डिंग है उसके बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए। जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको तो टच करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बट बहुत सारा गोल्ड लोगों की तिजोरी में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में पड़ा है जो व्हाइट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट है, वो हमारी फ्रोजन सेविंग्स है। गोल्ड के दाम बढ़े हैं और भी बढ़ते रहेंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स और अपनी हाउसवाइफ के बीच में एक कंपटीशन चल रही है कौन सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हमारी हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं, एक बार सोना खरीदा तो बेचेंगे नहीं। तो हमें फोकस करना है सेफ डिपॉजिट लॉकर में और तिजोरी में पड़े अनअकाउंटेड गोल्ड को, वह भी काफी बड़ी मात्रा है। कैसे हम उसे इंसेंटिव देके मेन इकोनॉमी का पार्ट बना पाए। सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों की फ्रोजन सेविंग्स लिक्विड हो जाएगी, इकोनॉमी में घूमने लगेगी और ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलेगा। तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके अगर एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ जाए जिससे तिजोरी में पड़ा अनअकाउंटेड सोना पैरेलल इकोनॉमी से मेन लाइन इकोनॉमी में आ जाए तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ग्रोथ के लिए कैपिटल भी अवेलेबल होगा। ओके, इस बीच मार्केट से डे हाई 49,805 निफ्टी बैंक और 23,593 यानी ऑलमोस्ट 23,600, यानी आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से डे हाई पर बजट स्पीच ले जा रहे हैं। 10:59। कुछ ही देर में अब संसद की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसका ट्रांसमिशन आपको दिखाया जाएगा और बजट स्पीच कुछ ही देर में। सौरभ, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे लेना चाहता हूँ। आप मिड कैप्स पे स्पेशली अर्निंग्स के बाद देखने के बाद इस बार आपका कन्विक्शन ये कोई बताया इस बार इस बजट इस अर्निंग्स के बाद? नॉन अर्बन में एक्चुअली उछाल आई है, राइट। अर्बन में जैसे काफ़ी आपके एक्सपर्ट्स ने बोला अर्बन में एक प्रेशर है, बट नॉन अर्बन में उछाल आई है। जिस प्रकार का दबाव 2021-22-23 में था नॉन अर्बन पे, वो काफ़ी हद तक घट चुका है। आप ट्रैक्टर के सेल देखें या जो रूरल फोकस्ड कपड़े बेचने वाले कंपनी है उनके नंबर देखें, डबल डिजिट में चल रहा है। सो एक ब्राइट स्पॉट है हमारे इकोनॉमी में, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, बट नॉन अर्बन। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 ध्यान रखिएगा, बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमन जी का 8वां बजट पेश होने जा रहा है। चलिए चलते हैं फिर सीधा पार्लियामेंट। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This
our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5.
facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone
and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal.
In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls
in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support.
social security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up.
At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided.
Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria.
Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws
To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence
except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches.
export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains,
Citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil
only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution,
In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. के तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सबसे बड़ा बजूका था वो एकदम एंड तक बचा के रखा, और अब हमारे न्यूज़ रूम में बहुत चीयर हुआ होगा, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप न्यू टैक्स रजीम में आ जाएंगे तो 75,000 रुपये उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और जोड़ लीजिए तो 12,75,000 रुपये तक उसमें कोई टैक्स नहीं होगा न्यू रजीम में, ध्यान रखिएगा। और ये उनके लिए जो स्पेशली अगर कैपिटल गेंस के अलावा जो एक नॉर्मल सैलरी इनकम है उस पर ये बात हो रही है, उसके अलावा जो 2-3 बड़े स्टेप्स लिए गए
अब देखिए, आप फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको FY25 के लिए 4.9% से घटाकर 4.8% पर लाया गया, FY26 के लिए 4.5% से घटाकर 4.4% पर लाया गया। कैपेक्स का नंबर जो पिछले साल जिसको 11.1 लाख करोड़ रखा गया था उसको 10.8 लाख करोड़ पर ला दिया गया, लेकिन वो आप कह सकते हो कि नंबर है आपके पास और जनवरी तक का कैपेक्स आपके पास होगा, और अगले साल का जो कैपेक्स नंबर है उसको 10.8 लाख करोड़ पर रखा गया, जो शायद मार्केट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक मार्केट इतने शानदार टैक्स प्रपोजल के बाद भी अगर नहीं चलाए तो उसका शायद कुछ लेना देना उस कैपेक्स नंबर से होगा, क्योंकि उसकी भी शायद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा अगर वो बढ़ जाए तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता वो। और बाकी बजट में काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट सब आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट नंबर मैं बताना चाहता हूँ हमारे पूरे के पूरे पैनल को, हमारे सारे के सारे गेस्ट को, CNBC आवाज़ इस पूरी बजट स्पीच के दौरान नंबर 1 चैनल है YouTube पर। 5 लाख लाइव व्यूअर्स CNBC आवाज़ पर हैं, जो किसी भी जनरल न्यूज़ चैनल, किसी भी बिजनेस न्यूज़ चैनल, किसी भी हिंदी चैनल, किसी भी इंग्लिश चैनल से एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, देखिए, हम एक चीज़ बताऊं मैं आपको, हम हर हफ्ते एक ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन बजट जैसा दिन एक दिन होता है जिसमें ये मैटर करता है कि कौन से चैनल को आप सुन रहे हैं। और CNBC आवाज़ अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से आज सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो आपके ही चैनल के साथ है। हमारे साथ हमारी बजट जूरी तैयार है, उनसे फटाफट व्यू लेते हैं। नीलेश भाई, बताइए क्या क्या होगा पहला वर्डिक्ट? बजट काफी अच्छा आया है। जो हमने उम्मीदें लगा के रखी थी कि फिस्कल प्रूडेंस का पाथ मत छोड़ना, 4.4% तो उम्मीद से भी ज्यादा आगे है। दूसरा कहा था अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देना, सपोर्ट देना, तो टैक्स की रियायतें उसको सपोर्ट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, वहां पे इस साल थोड़ा नंबर्स कम आए हैं, 11,11,000 करोड़ के सामने तकरीबन 10,18,000 करोड़ बताया है, तो उसके ऊपर शायद अगले साल बेस बड़ा होगा। ओके, थोड़ा सा आई थिंक नीलेश भाई के ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है। नीलेश भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपके पास वापस आ रहा हूँ। सुनील सिंघानिया भी जुड़े हैं हमारे साथ, एबिकस एसेट मैनेजर के फाउंडर हैं सुनील जी। सुनील जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच बजट पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट तो खैर काफ़ी वोलेटाइल है, बहुत कुछ कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने। जो 2 बड़ी हाईलाइट थी, एक तो कैपेक्स नंबर और एक जो इनकम टैक्स पर जो बड़ा डिसीजन लिया गया है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आई थिंक बजट जो एक्सपेक्टेड था उसी के लाइन पे है। थिंक जो की मैसेजेस हैं कि फिस्कल प्रूडेंस पे फोकस रहेगा, ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेस कंप्लायंस की तरफ फोकस रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिडिल क्लास की तरफ फोकस रहेगा। तो आई थिंक सब चीज को एड्रेस किया है। ऑब्वियसली वी स्टिल हैव टू सी द फाइन प्रिंट, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड टैक्स में रिलीफ है। तो जो 12 लाख की आमदनी वालों को 80,000 की रिलीफ है, आई थिंक बहुत ही अच्छी रिलीफ है। एक थोड़ा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 11 लाख करोड़ का होना था वो 10 ही लाख हुआ है। मे बी इस टाइम इलेक्शन के वजह से सब कुछ डिफर हो गया, बट गुड थिंग इज दैट कि वो पाथ बरकरार है। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर में और अगले साल बहुत धूम से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा होगा। और ये सब करते हुए भी, जैसे 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू फोरगो किया है, फिर भी फिस्कल प्रूडेंस की तरफ क्लियर एक मैनेज किया हुआ है। 4.4% दिस ईयर, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 6 साल तक लोअर फिस्कल डेफिसिट की तरफ देश बढ़ेगा। आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी डिसेंट बजट। तो फिर सुनील सर, कैसे देखें मार्केट को? यहाँ से क्या मार्केट अब जिस हिसाब से पोजीशन है वापस एक रैली की तरफ बढ़ेगा, या फिर ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है? तो अनुज ना, हमने देखा है बजट के इमीडिएटली बाद में इमीडिएट व्यू लेना मार्केट पे बहुत ही एक मानी 10 में से 9 जन रॉन्ग आते हैं। तो आई थिंक लेट अस सी द फाइन प्रिंट, बट आई थिंक मार्केट ऑलरेडी एक चैलेंजिंग मोड पे था। लास्ट 4-5 दिन में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया है। आई थिंक मार्केट को चाहिए कि देश में ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ, उसकी तरफ क्लैरिटी आए, और वो हो सकता है कि मार्च के क्वार्टर के आसपास वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए कि भाई ग्रोथ बरकरार है। बट बजट से इस ग्रोथ को थोड़ा सा पुश ही मिला है। इट्स नॉट अ हेडविंड, इट्स अ टेलविंड।
तो आई थिंक उसको देखते हुए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की तरफ ही जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक सेक्टर जहां पर वीरो बहुत शानदार रैली आ रही है वो है एफएमसीजी, क्योंकि इसका मतलब बहुत क्लियर है, लोग जाएंगे और कंज्यूम करेंगे। एक बार निफ्टी एफएमसीजी देखिए और एक बार निफ्टी ऑटो भी दिखा दीजिए जरा, लगे हाथ वो भी देख लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी करीब करीब 2.5% ऊपर और निफ्टी ऑटो ये देखिए 1.5% ऊपर। नीलेश भाई, क्लियरली सरकार ने बोला है कि टैक्स कट कर रहे हैं, अब प्लीज़ जाइए कंज्यूम करिए। और सबसे पहले लोग ज़्यादातर या तो गाड़ी खरीदते हैं या फिर बाहर जाकर ईट आउट करते हैं, मतलब एफएमसीजी और ऑटो सबसे शानदार रैली यहीं पर आ रही है। सबसे ज़्यादा यही सेक्टर गिरे थे पिछले अर्निंग सीजन के बाद। नीलेश भाई, तो डेफिनेटली इस वक्त अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स में रियायत दी गई है वो ज्यादातर लोग खर्चा करेंगे उसका। एंड रोटी कपड़ा मकान तो सबका हो रहा है, तो खर्चा एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी चीज पे होगा। एंड मार्केट इसी उम्मीद में कंजम्पशन एंड ऑटो स्टॉक्स को बढ़ावा दे रहा है। नीलेश भाई मनी मन चाह रहे होंगे 2 SIP और बढ़ जाए आदमी की, है ना, वो भी अच्छा रहेगा है। सौरभ, आपका व्यू बजट पे, पहला रिएक्शन? देखिए मेरे ख्याल से काफ़ी गेम चेंजिंग बजट है। आई थिंक सुनील सिंघानिया जो ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे कैपेक्स के नंबर पे, मेरे अनुमान से पहला बजट है 5 साल में। यहाँ पे कैपेक्स ग्रोथ का आंकड़ा 10-11% आया है, शायद उससे थोड़ा कम भी आया हो, राइट। पहली बार, क्योंकि लास्ट 5 साल में कैगार रहा है कैपेक्स पे खर्चा का 30%, तो काफ़ी मीनिंगफुल डायरेक्शन चेंज है। एंड अगर उल्टी तरफ देखूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वाइल्स्ट एफएमजी ने नंबर नहीं दिया, जो मेरा एस्टिमेट है, पहली बार 5 साल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिडी पे खर्चा डबल डिजिट में आ रहा है। लास्ट 4-5 साल का एवरेज रहा है 5-6% का। उसके साथ ही साथ अगर आप ये मिडिल क्लास का टैक्स कट ले लें, जो मेरे अनुमान से करीबन 2 करोड़ इंडियंस को बेनिफिट करेगा, ये एक डायरेक्शनली डिफरेंट बजट है, बिल्कुल ही डायरेक्शनली डिफरेंट बजट है टू व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम FY 21, 22, 23, 24। एंड कुछ हद तक मेरे ख्याल से ये बजट जून 2024 के जनरल इलेक्शन का नतीजा है। ये डिसाइसिव चेंज है एनडीए के रवैये में। आई थिंक कैपेक्स का पूरा जो थीम था वो आई थिंक डी एम्फेसाइज किया जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रो पुअर, प्रो SME और प्रो मिडिल क्लास, राइट। सो काफ़ी डिसाइसिव बजट है, मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग बजट है। मार्केट के स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन में शायद उतना अंतर ना आए कल सुबह, या आज मार्केट के डायरेक्शन में शायद अंतर ना है, बट पूरा जो कैपेक्स का थीम था, स्पेशली PSU कैपेक्स का थीम था, सरकारी कैपेक्स का थीम था, वो आई थिंक काफ़ी हद तक अभी ठंडा हो जाएगा। सुनील जी, एग्जैक्टली ये प्रश्न और आज लाजमी हो जाता है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये एक ऐसे स्पेस जब जो कि 4 महीने से सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज झेल रहा था FMCG। अभी आपके बात करते करते मैं देख रहा हूँ तो डे हाई पे, 3 महीने के हाई पे। इसको आप इन सर्कमस्टेंसेस में कैसे देख रहे हैं आप देखिएगा ना तो लास्ट साल भर में क्या क्या अपने हेडविंड्स थे। एक तो कंजम्पशन में ग्रोथ ही नहीं थी, दूसरा ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी थोड़ी सी टाइट थी, और उसके रहते हुए भी बोथ केपेक्स एज वेल एज कंजम्पशन में थोड़ा सा इश्यू था, और ऑब्वियसली थर्ड था कि गवर्नमेंट का केपेक्स भी थोड़ा डिले हो गया इस टाइम। आई थिंक ये तीनों चीजें भी ठीक होगी, तो खाली कंजम्पशन को हम नहीं पकड़ते, बट अगर आप कंजम्पशन का सिर्फ लें तो अभी थोड़े दिन पहले RBI ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। आई थिंक उससे एक जो कंस्ट्रेंट था लिक्विडिटी का और फ्रेश लेंडिंग का, वो थोड़ा ईज होगा। और आज जो ये 70-80 हजार रुपए का जो एक बेनिफिट हुआ है टैक्स में टू इंडिविजुअल इंडियन, आई थिंक उससे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली कंजम्पशन में ही जाता है पैसा वो, और सब्सटैंशियल है। लाइक 12 लाख में 80 हजार रुपया अगर किसी का बचता है तो बेसिकली वो पूरा का पूरा उनके लिए एक नेट इनकम है। और उसको देखते हुए आई थिंक थोड़े से स्टॉक्स में ऑटो हो या कंजम्पशन हो या थोड़ा रियल एस्टेट हो, उसमें बहुत लॉजिकली एक अपमूव है। बट खाली टैक्सेशन के वजह से ऐसा नहीं है कि ये इसका पूरा सेक्टर 20-30% बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक रैली एक्सपेक्टेड थी वो है, but as I said, at the margin for consumption as well as for capex, दोनों जो एक बोलते हैं ना जो प्रीडोमिनेंट व्हील्स है इंडियन इकोनॉमी के, आई थिंक दोनों को एक अच्छा बूस्ट मिला है। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार आप जरा 3-4 इंडेक्स देखिए और नीलेश भाई को भी रखिएगा और पूरे पैनल को रखिएगा हमारे स्क्रीन पर। गुरमीत आपके पास भी आ रहा हूँ 1 मिनट में। देखिए जरा आप एक बार मारुति का चार्ट, आप जरा एक बार देखिए। आज सुबह हमारी बात हो रही थी वीरू मारुति पर, आप देखिए एक बार TVS मोटर का चार्ट, आप देखिए एक बार जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट, और आप देखिए एक बार ट्रेंट का चार्ट। और
ये सारे के सारे स्टॉक्स लगातार एक के बाद एक दनादन। नीलेश भाई, वीकेंड पे क्या प्लान है? ये जो टैक्स बचाएंगे इससे क्या कहाँ पे खर्चा करेंगे? अनुज भाई, आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 40 रुपए सरकार टैक्स में लेके जाती है। थोड़ी बहुत बचत जरूर होगी इस बजट से। 20 रुपया एनपीएस और ईपीएफओ में डाल देता हूँ। 20 रुपया स्किन इन द गेम सर्कुलर के तहत अपनी सारी स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी 20 रुपए मेरी बीवी को दे देता हूँ। तो मेरी जेब में तो पैसा नहीं है। अच्छा सुनील जी, आपके पास तो ये दिक्कत नहीं है। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को स्किन इन द गेम में अपने फंड में डालना है, तो आप क्या करेंगे इस धनराशि का? एक और प्रॉपर्टी लेंगे क्या? अनुज, क्या है ना, नीलेश भाई जो बोले वो सर आंखों पर, अब बट वो 20 रुपया खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो अगर सब इन्वेस्टर को बोलते हैं कि हमारे यहाँ में इन्वेस्ट करो, हम आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे, तो खुद की भी तो वेल्थ क्रिएट हो ही रही है। और नीलेश भाई ने आज तक चाय नहीं पिलाई, तो उनका खर्चा है। अरे आप लोग स्टूडियो आ जाइए, चाय क्या, हम सबसे शानदार चाय ब्रेकफास्ट सब रेडी है यहाँ पर। हर बार बोलते हो, हर बार आशा में आते हैं। अरे सुनील जी देखिए, ये इसमें फिर मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपको पता है कि जो हमारी और आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी वो आपकी तरफ से पेंडिंग है, मेरी तरफ से नहीं है। वो आप अच्छा है, सबका पैसा बच रहा है, तो हम भी आपकी टांग खींच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। सुनील सर क्या खरीदें फिर? अब आप कहाँ पैसा लगाएंगे एक्स्ट्रा अब जो इस बजट के बाद? देखो अनुज, फ्रैंकली लास्ट 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ, सिर्फ बजट को देख के आई डोंट थिंक कोई अपना व्यू चेंज करता है पर्टिकुलर। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट इट्स द सेम थिंग। जैसा मैंने कहा, इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी। आई थिंक जब तक ग्रोथ नहीं आएगा तब तक इन्वेस्टर यहाँ आएगा भी नहीं बाहर से, और ना यहाँ बड़ा पैसा बनेगा। आई थिंक द गुड थिंग इज दैट ये बजट ने ग्रोथ एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट एड्रेस किया है। अभी भी फाइन प्रिंट देखना बाकी है, अनेक्चर ए और बी जिसका रेफरेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी बार किया, वो देखना बाकी है। बट एट द मार्जिन जो एक थोड़ी सी एनिमल स्पिरिट मिसिंग थी इन टर्म्स ऑफ पीपल स्पेंडिंग एंड केपेक्स हैपनिंग, होपफुली ये अगर एनिमल स्पिरिट्स इग्नाइट हो जाती है, तो आई थिंक एनी गुड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विल डू वेल। शरद जी, आपकी प्रतिक्रिया पहली। और ये सर, ये क्या 12 लाख में कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है ना? थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। नहीं, 12 लाख में जो स्पेशल रेट पे होता है वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता होगा कि 12.5% पे होता है, शॉर्ट टर्म 20% पे होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। 12 लाख तक अब आपकी सेक्शन 87A के अंतर्गत ये होगी। अभी फाइन प्रिंट देखना है, पर मुझे पूरा यकीन है कि 87A, आपको पता होगा पहले जो 7 लाख था वो सेक्शन 87A का रिबेट मिलता था 25,000 का, उसी रिबेट के सहारे ये 12 लाख कर दिया गया। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो 3 लाख से 4 लाख हो गई है, पर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 4 लाख से 12 लाख तक का अब रिबेट मिलेगा। और कुछ और चीज़ें हम ध्यान से देखें, अगर इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा अच्छा आया है। सीनियर सिटीजन को टीडीएस की बड़ी सरदर्दी होती थी, 50,000 जैसे ऊपर इंटरेस्ट मिलता था टीडीएस कट जाता था, अब वो 1 लाख तक हो गया है। और रेंट पर टीडीएस में बहुत फ़ायदा हुआ है, रेंट पर अब 6 लाख तक का टीडीएस नहीं कटेगा जो लोग रेंट पे करते हैं, जो रेंट रिसीव करते हैं। दूसरा, बहुत बड़ी मात्रा में लोग गलत रिटर्न फाइल कर देते थे या कुछ मिस कर जाते थे, या कई दफ़े कुछ लोग शरारत से छोड़ भी देते थे, तो वो अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A है एक इनकम टैक्स में, जो पिछली बार लाया गया था, उसके अंतर्गत अब आप 4 साल तक पिछले की गलती सुधार सकते हैं। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि इससे संबंधित CNBC आवाज़ पर भी जो आप टैक्स गुरु शो आता है उसमें बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास अगर 2 घर हैं और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहते हैं, पहले एक ही आपको अलाउड था, अब दूसरा अगर खाली घर रहता था सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आपको एक नोशनल रेंट का ऐड होता था आपकी इनकम में, अब वो 2 लाख तक कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ पर्सनल इनकम टैक्स में बड़ा चेंज है, क्योंकि 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख तक कोई टैक्स, मतलब 1 लाख रुपए महीना तक आप कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं। और उससे भी बड़ा चेंज मुझे लग रहा है जो ये स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं, और स्लैब रेट्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले 3, 6, 9, 12, 15 था, अब ये 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल, हालांकि मैं अभी चार्ट पे वर्क कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम वर्क कर रही है क्योंकि मैं स्टूडियो में हूं, अभी हम चार्ट सामने लाएंगे कि कितना फर्क पड़ेगा अलग अलग लेवल्स के इनकम पर
एक्चुअली टैक्स सेविंग कितनी होगी? मेरा अनुमान है कि करीब करीब आपको 40,000 से 1 लाख रुपए तक की, जो कि बहुत बड़ी है। और मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड इसका स्टॉक मार्केट्स पे असर पड़ेगा। ये सब खर्च करने वाले हैं लोग, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देंगे, SIP कर देंगे, अलग बात है। पर ज़्यादातर लोगों के खर्चे रुके हुए थे महंगाई की वजह से और कारणों से। तो मुझे लगता है सारा पैसा ये मार्केट में अल्टीमेटली आएगा, ये पर्कुलेट होगा पैसा सारे सेक्टर्स बिल्कुल में। सारा पैसा पर्कुलेट होगा, ये बात बिल्कुल सही है। शरद जी बिल्कुल उस वर्किंग पर आइए और उसके बाद आपसे तो और डिटेल में भी लेंगे। गुरमीत, मार्केट क्यों नहीं चल रहा है फिर? निफ्टी क्यों अभी भी 70 पॉइंट नीचे, मिड कैप अभी भी नीचे? क्या मार्केट को पसंद नहीं आ रहा फिर? अनुज, मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा था, पर फिस्कल डेफिसिट आपने जो 4.9 का 4.8 किया या 4.5 का 4.4 किया, वो अगर नहीं भी करते और थोड़ा कैपेक्स बढ़ा देते, बट ठीक है, वो एक बात है। आई थिंक वो रीप्राइस करेगा। अब तो जो थीम्स चल रही थी, रेलवे, डिफेंस, सीमेंट, हाँ नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा रीबैलेंसिंग होगा। और कैपेक्स में भी रूरल स्पेंडिंग पे फोकस है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक चीज़ रियलाइज करी अनुज, कि अगर 8% सस्टेनेबल ग्रोथ है तो सारी हैवी लिफ्टिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्राइवेट कैपेक्स पे होना पड़ेगा। प्राइवेट कैपेक्स जब होगा जब डिमांड आएगी, तो चिकन एग है। तो मुझे लगता है वो ब्रॉडर कंजम्पशन रिवाइवल से प्राइवेट कैपेक्स की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स रिलीफ से कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है रीप्राइसिंग होगी थोड़ी सी। बट इसलिए अनुज हम कहते हैं ना, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हमने IT को राइट ऑफ कर दिया था, हमने अभी FMCG को राइट ऑफ कर दिया था, और यही इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि रोटेशन होता है मार्केट में, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, चलिए एक मुझे ना क्योंकि हमको काफ़ी व्यूज़ इकट्ठे करने हैं हमारे बाकी के दिन के लिए भी, मैं कुछ और चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। नीलेश भाई, अब आपने स्पेंड किया होगा पिछला आधा घंटा ये बजट एनालाइज करने में। इवेंचुअली अब इस बजट को आप कैसे रेट करेंगे और यहाँ से एक आम इन्वेस्टर क्या करे? तो एक चीज जो इस बजट में हमें बहुत पसंद आई वो सेंट्रल KYC है। अनुज भाई, KYC के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है और उस वजह से कई बार नए निवेशकों को मार्केट में लाने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो ये सेंट्रल KYC अगर होगा तो मेरे हिसाब से इससे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज अनुज भाई, एक फोकस है नई जगह पे जाने की। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले हम लोग खिलौने इंपोर्ट ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। धीरे करके हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ खिलौने बन गए। बट अब इस बजट में कह रहे हैं कि हम खिलौने में ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। चप्पल, फुटवेयर, जूते, ये तो मतलब कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चीज नहीं है। अब इस बजट में फोकस है कि कैसे हम क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, कैसे हम स्किल सेट डेवलप करें और जूते, फुटवेयर जैसे सिंपल, जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसे बढ़ावा दे पाए। सेम चीज डीप टेक में निवेश के लिए है, तो तकरीबन 20,000 करोड़ का फंड उसके लिए खड़ा किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए दिए गए हैं। तो कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं इस बजट में नई दिशा में जाने का प्रयास है, चाहे वो टॉयज हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर हो, चाहे डीप टेक हो। तो ये सारी चीजें होपफुली अगर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे तो देश के लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, इस बीच निफ्टी है वो डेढ़ों पर आ रहा है। बट सुनील जी, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इवेंट, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अभी गुरमीत जी ने कहा कि वो आपको सेक्टोरल रोटेशन के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आज के इस बजट के बाद थोड़ा झुकाव आपका FMCG पर, और आप थोड़े से आज की इस घटना के बाद कैपिटल गुड्स को लेकर और सीमेंट को लेकर थोड़े से कॉशियस रहेंगे? आई थिंक कंजम्पशन, जैसा मैंने पहले कहा था, लास्ट 1 साल में थोड़ा सा वीक था, और ऐसे भी बजट के पहले भी हमारा व्यू था कि कंजम्पशन अगले साल भर के लिए, 2 साल के लिए काफी ठीक लग रहा है। मानसून बहुत अच्छे रहे, रूरल इनकम अच्छी है, और थोड़ा सा एक लेटेंट डिमांड भी है। आई थिंक बजट से उसको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। तो हाँ, कंजम्पशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा आई थिंक पोर्टफोलियो में अगर होगा तो अच्छा ही होगा। लेकिन हमारा थोड़ा सा वैल्यू की तरफ झुकाव है, तो काफी कंजम्पशन स्टॉक्स काफी महंगे हैं, बढ़ने के पहले भी महंगे थे और आज 2-3% और हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई हमारा थोड़ा सा झुकाव डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे ज्यादा रहता है, स्टेपल्स पे थोड़ा कम रहता है। केपेक्स, जैसा मैंने कहा, इंडिया हैज टू ग्रो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो, एयरपोर्ट हो,
अक्रॉस एग्रीकल्चरल इंफ्रा हो, वाटर इंफ्रा हो, आई थिंक वी कैन नॉट लिव विदाउट इंफ्रा एंड केपेक्स। तो आई थिंक उसमें हमारा व्यू पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, और बजट ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे हमारा व्यू में कुछ चेंज आए। ऑब्वियसली इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एलोकेशन है वो अभी तक पता नहीं है, वो देखना अभी भी बाकी है, बट ऐसा स्पीच को सुन के इट इज ओनली पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। कि CNBC आवाज़ इस समय नंबर 1 चैनल है यूट्यूब पर, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और हमारे साथ बेस्ट पैनल भी अवेलेबल है। नीलेश भाई और सुनील जी, आप दोनों से मैं एक एक सवाल अब लेना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। सुनील जी, अब हालांकि आपका व्यू हमेशा ही रहता है कि नियर टर्म मार्केट मूवमेंट्स में मत जाइए, लेकिन क्या बाजार ने जो पेन झेली है पिछले 5-6 महीने की, उसके अंत होने के कुछ साइंस हैं? क्या ये बजट उसको मार्क करेगा? जो लोज हमने देखे थे, जो पेन हमने देखी थी, क्या वो अब हम पीछे छोड़ सकते हैं? मार्केट का ये नियम है, मार्केट विल ऑलवेज हैव दिस फेजेस, जहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। कोई फेज ऐसा होता है जिसमें बहुत रिटर्न बन जाते हैं, कोई फेज ऐसा होता है जिसमें थोड़ा पेन भी देखना पड़ता है। आई थिंक लास्ट 2-3 साल में मार्केट्स बहुत ही अच्छे एक सॉर्ट ऑफ मूड में था। आई वुड से दैट काफी जगह वैल्यूएशन से ज्यादा प्राइस में मूवमेंट आ गया था, और हमने जो ये लास्ट जून जुलाई से लेके अब तक जो देखा है, लास्ट मे बी सितंबर में पीक बनाया था, बट जून जुलाई से लेके आज तक जो 6 महीने हुए हैं उसमें काफी चैलेंजेस आई, और प्रीडोमिनेंट चैलेंज थी कि अपना ग्रोथ जीडीपी का भी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का भी, उसमें बहुत स्लो डाउन हुआ, और शेयर सस्ते नहीं थे, इसके लिए आपको करेक्शन देखने मिला। आई थिंक बीच बीच में करेक्शन आना जरूरी भी है, थोड़ा एक रियलिटी चेक भी हो जाता है। एज वी स्पीक थोड़े मुझे नहीं लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाने की जगह है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस पहले के मुकाबले ठीक है, लेकिन अभी भी एकदम कंपेलिंग नहीं है। तो आई थिंक ये साल थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहने वाला है, और अगर हमें लगता है कि अगर ये साल में हमने अगर लो डबल डिजिट रिटर्न भी बना लिए तो इट विल बी अ ग्रेट ईयर। और आई थिंक उसको ये बजट ने उसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट कर दिया है। लगता है कि लो डबल डिजिट रिटर्न इस साल भी बन सकते हैं, बट अगर उससे ज्यादा की आपकी उम्मीद है तो देन वी विल हैव टू हैव मेनी मोर पॉजिटिव्स व्हिच विल हैव टू कम। नीलेश भाई, सेम सवाल आपसे, क्या मार्केट में एक तो वर्स्ट इज ओवर, एंड दूसरा किस तरीके के रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखें? तो अनुज भाई, कैपेक्स के नंबर आए हैं, ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे आया है, तो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, बट रफली 10.18 लाख करोड़ इस साल के सामने अगले साल 11.21 लाख का बजटेड कैपेक्स है, 10% ग्रोथ। और एक इफेक्टिव कैपेक्स उन्होंने दिया है नंबर 13.2 लाख करोड़ से 15.5 लाख करोड़, दैट इज अ 17% इंक्रीज। तो बिटवीन PSU एंड गवर्नमेंट तकरीबन 15.5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा अगले साल, विच विल बी 17% जंप। एंड यस, पिछले 1-2 महीने में कचरे स्टॉक की पिटाई ज्यादा हुई है, बट जो अच्छे स्टॉक है वो तकरीबन 10-12% गिरे हैं। तो 10-12% करेक्शन को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जायज है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश कर रहे हैं, 1 साल का व्यू लेके मत निवेश करिए। पिछले 5 साल का रिटर्न 20-22% के आसपास है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। और जैसा सुनील ने कहा कि अगर आप लो डबल डिजिट रिटर्न देख रहे हैं, हाई सिंगल डिजिट रिटर्न देख रहे हैं, जो महंगाई से फिर भी रियल रिटर्न देगा, तब जाके निवेश करना चाहिए। सुनील जी, तो कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करनी है यहाँ से? हम रिटेल निवेशकों को क्या नहीं खरीदना है? कई बार ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या खरीदना है तो सब पूछते हैं। अनुज, क्या हुआ है ना, लास्ट साल 2 साल में नैरेटिव स्टॉक्स और सेक्टर्स में बहुत पैसा गया है। नैरेटिव का मतलब ये है कि आप कोई वैल्यूएशन देखते नहीं हो, थीम आपको अच्छी लगी, EMS थीम अच्छी लगी, रेलवे अच्छी लगी, डिफेंस अच्छी लगी, तो आपने बिना रिसर्च किए हर कंपनी के में डाल दिया जो उस सेक्टर में एग्जिस्ट करती थी। तो उसमें बढ़ता भी वैसे ही है, घटता भी वैसे ही है। तो जैसा नीलेश भाई ने कहा ना, आई थिंक लॉट ऑफ डैमेजेस हैपेंड टू कंपनी जहां पे या तो फंडामेंटल नहीं थे, या तो प्राइस बहुत ज्यादा फंडामेंटल को डिस्काउंट किए बिना बढ़ रहे थे। आई थिंक एज वी स्पीक अभी भी मैं देखता हूं ना, बहुत लोग मैसेज भेजते हैं कि ये शेयर इतने % से गिर गया, इसके लो।
So just because a stock has fallen by a particular percent, it does not become a buy. I think अभी भी जैसे मैंने कहा, it is not going to be a one-way market, at least as per us. तो कोई भी चीज जल्दी में मत करिए, आप सोच समझ के करके करिए. ऐसे भी at least our view is that in this year, low to maybe mid-teen returns would be a great returns. तो जल्दी मत करिए कोई चीज. लो टू मिड टीन रिटर्न्स वुड बी ग्रेट रिटर्न्स. सौरभ, एक नज़र जा रही है मेरी, जोमेटो, स्विगी, ये सब स्टॉक्स भाग रहे हैं. मतलब अब ऑब्वियसली 12 लाख तक टैक्स, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो लोअर स्ट्रेटा है वो आजकल इनको यूज़ करने लगा है, ब्लिंकिट, जोमेटो, सबको. क्या ये एक फ्रेश री रेटिंग कैंडिडेट होगा इन स्टॉक्स के लिए? स्विगी जोमेटो का तो ये भी वजह है कि वो गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर स्कीम में पीएम जन आरोग्य में खींच लिया गया. बट आई थिंक ओवरऑल जो थीम आपने सही पकड़ा है, मेरे ख्याल से मार्केट में कशमकश चल रही है, विच इज़ वाई आप देख रहे हो इंडेक्स नीचे जा रही है. करीबन 60% स्टॉक मार्केट कैपेक्स से जुड़ा हुआ है किसी तरीके से. बिल्कुल. करीबन 30-40% एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन वाली स्टोरी है. तो देयरफॉर जो प्रीडोमिनेंट मार्केट है वो नीचे खींच रही है. कंजम्पशन के लिए तो बजट में दो राय नहीं है. प्रो कंजम्पशन बजट है, प्रो पुअर भी बोलूँगा मैं इसको, और प्रो एसएमई भी बोलूँगा. वो वाली पूरी थीम जो लास्ट 2-3 साल थोड़ी सहमी हुई थी, कंजम्पशन की स्टोरी, कैपेक्स की स्टोरी में काफ़ी प्रोत्साहन था, काफ़ी जोश था. आई थिंक वहाँ पे थीम में चेंज आएगा. बट ओवरऑल अगर हम देखें अर्निंग्स ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ का पिक्चर अभी भी शायद और एक साल थोड़ा ठंडा रहेगा. टिपिकली इंडिया में इकोनॉमी 3 साल अच्छा करती है, फिर 1-1.5 साल ब्रीदर लेती है. तो आई थिंक वी हैव बिगन दैट ब्रीदर पीरियड, और 2-3 क्वार्टर ऐसे ब्रीदर चलेगा जहाँ पे जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा ठंडा रहेगा. उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वैल्यूएशंस है अभी भी थोड़े रिच हैं, तो मैं बोलूँगा ओवरऑल मार्केट में शायद उतना जोश ना आए. बट ये बात में मेरे ख्याल दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी बन रही है, मोर आई लुक एट द बजट, कि एक डायरेक्शनल चेंज है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विनर्स इन दिस मार्केट, अवे फ्रॉम द कैपेक्स थीम. कैपेक्स थीम को पीछे छोड़ के हम कंजम्पशन थीम के आगे बढ़ रहे हैं. नीलेश भाई, एक सवाल, एक थीम थी जिस पर आपकी मेरी कई बार बात भी हुई है पोस्ट बजट, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, होम इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे स्लो डाउन, यहाँ पे जो प्राइस डैमेजेस हुए हैं स्टॉक्स में वो सब्सटेंशियल हुए हैं. आई मीन कहीं तो आधा भी हो गए हैं स्टॉक्स. क्या वजह है इसकी, आप मानते हैं? क्या जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट, मतलब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नए प्रोजेक्ट्स का अभी कमी अभाव है? एग्जैक्टली ये स्पेस, ये थीम आपको लग कैसे रही है इस प्राइस पे? रियल एस्टेट में एक चीज हुई है कि प्राइसेस काफी बढ़ गई है, और अब सुनने में आ रहा है कि लोग खरीदारी करने में संकोच कर रहे हैं. दूसरी चीज, ब्याज की दरें बढ़ी है, तो हाउसिंग लोन जो कभी 7-7.5% था, आज 8.5-9% के आसपास पहुंच गया है. तो ब्याज के दरों की ईएमआई की बर्डन भी हाउसिंग परचेज में दिख रही है. तीसरी चीज शायद ये हो रही है कि लोगों का खर्चा अलग हो रहा है. अगर आप 1.5 लाख रुपए का एप्पल का आईफोन खरीदेंगे तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी. वह कटौती हो सकता है पेंट्स में हो रही है, टाइल्स में हो रही है, या बिल्डिंग मटेरियल्स में हो रही है. तो ये सारी चीजें मिला के रियल एस्टेट सेक्टर में एक सबड्यूडनेस, एक सॉफ्टनेस लाती हुई दिख रही है. आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हमें यहाँ से बढ़ावा देना है तो कहीं जो एक बिजनेस मॉडल ऐसा है, रुमाल डाल दीजिए और धीरे धीरे प्रोजेक्ट को खड़ा करते रहिए, स्केर्सिटी ऑफ रियल एस्टेट करके प्राइस रियलाइजेशन या रिटर्न ऑन इक्विटी बनाइए, वहां से फैक्ट्री मॉडल पे जाना पड़ेगा. 3 साल की जगह या 5 साल की जगह में बिल्डिंग बनाए, उससे अच्छा 12-18 महीने में बिल्डिंग बना के कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सके. जितनी कम कीमत करेंगे, प्राइस कम करेंगे, शायद उतना ही बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा. बिल्कुल. गुरमीत, अब यहाँ से आगे क्या, अब मार्केट आगे क्या देखेगा? मतलब नेक्स्ट इमीडिएट ट्रिगर क्या है? पॉलिसी? हाँ, आरबीआई पॉलिसी अनुज, मुझे लगता है थोड़ा एफआईएस का रिएक्शन भी देखना होगा. आज सैटरडे है, तो आज जो आप देख रहे हैं वो शायद ज़्यादातर डोमेस्टिक है. हाँ, बिल्कुल. तो मुझे लगता है ओवर द वीकेंड हमें तो समझना पड़ेगा कि जो केपेक्स का नंबर, एक नीलेश भाई ने अच्छा नंबर दिया कि पीएसयू प्लस जो केपेक्स है गवर्नमेंट का, वो 15-16 लाख करोड़ प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ पार्टनरशिप की बात करी है. एक जो मुझे अभी फाइन प्रिंट मैंने देखा, जो गवर्नमेंट ने 2030 का एक दिया है कि डेट टू जीडीपी 50% हो जाएगा. ये एक बहुत बड़ा है. अब ये लगभग 80% के आसपास है. तो क्या ये फिस्कल डेफिसिट इसलिए पे कम किया है कि रेटिंग अपग्रेड चाहते हैं? कुछ जरूर बैक ऑफ द माइंड रहा होगा. और मैं सौरभ से अग्री करता हूँ, आपको पोर्टफोलियो का वेटेजेस चेंज करने पड़ेंगे. हम बहुत ज़्यादा केपेक्स
एनर्जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड हैवी रहे हैं और उन्हीं पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया है। ये साल कंजम्पशन का बॉटम अप आपको कंजम्पशन, और मैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे भी आऊँगा। जैसे टूरिज्म है, आप महाकुंभ देखिए अनुज जी, अपने आप में वर्ल्ड वाइड स्पेक्टिकल है। बिल्कुल। आप इंटरग्लोब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है अर्बन का, उसका कंजम्पशन बास्केट चेंज हुआ है। डिजिटल कंजम्पशन पे ध्यान देना पड़ेगा, टूर्स एंड ट्रैवल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कंजम्पशन बास्केट बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, स्पेशली न्यू एज बिजनेसेस में और ट्रैवल टूरिज्म। सौरभ, आपके हिसाब से अब नेक्स्ट ट्रिगर टू वॉच और किन तरीके के स्टॉक्स पर अब ध्यान दें? आई थिंक आरबीआई पॉलिसी, ये जो कंसोलिडेशन हुई है, इससे आरबीआई को रेट कट आएगा? रेट कट का आई थिंक रूम ज़रूर बनता है इसी पॉलिसी में या मेरे ख्याल से इसी पॉलिसी में रेट कट आएगा। Okay. इस प्रकार का कंसोलिडेशन विच इज़ आई थिंक कंसोलिडेशन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। इकोनॉमी को रेट कट की ज़रूरत है एंड आरबीआई के पास आई थिंक अब कोई रीज़न ना रहा। अगर सरकार कंसोलिडेट नहीं करती, आरबीआई के लिए रेट कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, गिवन दैट रुपीज़ अंडर प्रेशर। इस कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक आरबीआई के लिए केस स्ट्रॉन्गर बनता है कि रेट कटिंग साइकिल शुरू कर दी जाए। सौरभ जी, गुरमीत जी, थोड़ा सा आपको विराम देता हूँ। थोड़ा सा आई थिंक काफ़ी समय से आप हमारे साथ हैं, थोड़ा चाय पर कॉफ़ी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। एमके वेंचर्स के मधु केला भी हमारे साथ जुड़े हैं। मधु सर, गुड आफ्टरनून। मैंने सुना